welcome back. Today is our third episode of Baithak. Let's talk. Uh, आज हमारे साथ फिर एहसन, उमैर और तलाल हमारे गेस्ट मौजूद हैं इस पैनल पे और आज की डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. Today is October 25th, 2023. So पाकिस्तान अफगानिस्तान का गेम हो चुका है एंड हम लोगों ने कुछ प्रिडिक्शंस भी की थी लास्ट पॉडकास्ट पे और उस प्रिडिक्शन के हवाले से भी बात करेंगे और थोड़ा अपने इमोशंस और अपने सेंटिमेंट्स भी जाहिर करेंगे. Guys, let's keep it PG-13 though, because I know emotions are, I don't know what to say. But in any case, let's start off. We have Ahsen, Hello everyone. Assalamu alaikum. Umair, Assalamualaikum. and Talaal. Hello, everybody. Good to be back with three Khans. Thank you so much. All right, let's get right into it. Okay, Pakistan, Afghanistan. Ahsen. Yeah, I should start with Afghanistan outplayed Pakistan in everything. हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान विन करेगा, बट मैंने कहा था कि अब गेम क्लोज जाएगा और अफगानिस्तान विल कम विद एनर्जी. Disclaimer. I was the only one who said 50-50. I'm not saying Yeah. Pakistan would win. I was the only one that said 50-50. Yeah, just to throw it out there. Being optimistic, I always say कि Pakistan will win. बट डेफिनेटली हम स्टैट्स को देखते हैं, हम टीम की बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, उनकी एनर्जी को देखते हैं, तो हर टीम जीतने आई है, खेलने आई है. बट अफगानिस्तान इज अ डिफरेंट टीम इन दिस वर्ल्ड कप. इवन बिफोर इन एशिया कप उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान के साथ खेल रहे थे, पाकिस्तान को ऐसे उन्होंने प्लेट में रख के कोई विन नहीं दिया. पाकिस्तान हैड टू फाइट फॉर इट. सो यार गेम देखा जाए तो they won it, they deserved it in another sense कि उन्होंने इतना अच्छा खेला, they chased the game. and पाकिस्तान की गलतियां थी बॉलिंग में, फील्डिंग में, all what and all. बट अब जो हुआ सो हुआ. हम पाकिस्तान की तरफ से तो हम कह सकते हैं कि we can try again, but Afghanistan outplayed us, so it is what it is. Umair? मैं बोलूं भी तो क्या बोलूं भाई. चेहरा छुपाने का दिल चाह रहा है, चेहरा छुपाने का दिल चाह रहा है. It was extremely disappointing. मैंने पहले भी बोला था in the last podcast के 280 अगर कर लेंगे तो डिफेंड हो जाएगा. So I don't think इसमें बैटिंग की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी because it was turning as we saw, right? वो आपका 19 साल का बच्चा नूर जो स्पिन कर रहा है, वो हमारे शादाब में ताकत नहीं है ऐसी कोई, ना उसामा मीर ऐसा कुछ कर सकता है, राइट? सो we struggled mightily. I would blame this completely on the lack of bowling and fielding effort, right? Batting 280 तो अच्छा टारगेट है, लेकिन हमारी जो execution है, maybe it's the field placement, maybe it's Babar's captaincy, or maybe is it just I think every over there were boundaries that were going. There was literally no pressure being built up. I think every match we keep blaming कि ये हम switch कर लें, इस बंदे को ले आए, उस बंदे को ले आए. It doesn't matter who we bring. अब ये personnel की problem नहीं है. I think this is a problem of execution and passion. टीम में chemistry नहीं है बिल्कुल भी. Just like Babar was saying, right? अगर batting कभी किसी दिन चल जाती है, then bowling actually has been completely off. I would say our batting is our strong suit right now, right? तो जब उसामा मीर आया, हम उसको, yeah, which is really weird. Usama Mir आया, we thought he was our ace bowler, and he's getting hit for like 7 runs and over. No pressure, no nothing. So extremely disappointed. I mean, I don't know. I मैं क्या बोलूं भाई. Ask the All right, let's go. Talaal. Yeah, I thought India was our nemesis. I think it's now becoming Afghanistan. Matlab 8-0. I mean, we have lost 8 in a row against India in the ODI World Cups. अब अफगानिस्तान के साथ भी आई थिंक कहीं ये ना हो जाए. आई होपफुली नॉट. आई विश आई एम रॉन्ग. लेकिन जिस तरह अफगानिस्तान ने हमें फेंटा लगाया है उस दिन, आई मीन यार लिटरली जैसे एहसन और उमैर ने कहा, मतलब ऑल फेजेस ऑफ द गेम, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, यार हम सब में मतलब आउट क्लास्ड हो गए. एंड अफगानिस्तान को क्रेडिट, they get all the credit in the world because they played with their heart, they played with intensity. यार उनमें aggression था. I mean, which we lacked. I mean, if you look at their
their start, I mean, they haven't lost a wicket. I mean, they're 100 opening partnership. So really, I think we lost in every phase of the game. और अब ऐसा लग रहा है कि it's becoming a daunting task to beat Afghanistan in the World Cups or bilateral series, whatever. So True. I think, yeah. So just looking back at this game, I think it's gonna be tough just to obviously swallow this loss. And moving forward, now you have to play South Africa and prep for them, which is another, it's like climbing a Mount Everest, to be honest. True. So yeah. Well, I do agree with all of you. एक चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि बैटिंग, I was not disappointed in the batting. Batting was, I would say कि एवरेज थी, कि बुरी नहीं थी, एवरेज थी. और जितना स्कोर सब कह रहे थे कि यार 280 290 हो जाएगा, that's pretty much the average Yeah. score, and that is defendable. The और मेरी भी problem यही is, प्रेडिक्शन थी कि 280 प्लस अगर होता है तो we have a chance, but unfortunately it wasn't meant to be. yeah, because you were right from the batting perspective, but the bowling issue, That let us as down. Umair said rightly, bowling was the main issue. Bowling, and horrible bowling. Not only just bowling, horrible bowling. शाहीन आफरीदी को पहली बॉल पे चौका पड़ता है. हारिस रऊफ को तो खैर पहले ओवर में 17 रन मारते हैं. वो ये हाल हो गया था कि हर कोई इसको आके कंसोल कर रहा है कि यार कोई बात नहीं, चलो चिन अप. इवन दो सेकंड ओवर उसने मेड इन किया, लेकिन पहले Yeah. ओवर में 17 रन कंसीड किए उसने. तो कहने का मकसद ये है कि यार बॉलिंग को क्या हुआ है मेरी समझ में नहीं आ रहा है. और ये तीसरा पॉडकास्ट है और इसके अंदर दोबारा मैं वही बात कहूंगा जो मैं पहले दो में भी कह चुका हूं कि एशिया कप से पहले जब सीरीज हुई थी अफगानिस्तान की, उसमें बॉलिंग बुरी तरह एक्सपोज हुई थी और अफगानिस्तान ने ही की थी एशिया कप में जाने से पहले. सो इट वाजंट लाइक कि यार इट वाज सम सॉर्ट ऑफ अ सरप्राइज कि अचानक से हमारी बॉलिंग बिल्कुल ही खराब हो गई. But it was coming. It was written on the wall. बस ये है कि कोई पढ़ नहीं रहा था उसे, सब आंखें बंद करके घूम रहे थे. अच्छा, दूसरी चीज ये कि मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इवन अफगानिस्तान went with only two pacers. Everyone else was a spinner. तो पाकिस्तान ने why they did not think of that? क्यों वो लकीर के फकीर बने हुए हैं कि नहीं पहले के 10 ओवर जो है वो पेसर ही करेंगे, चाहे वो पागलों की तरह पिटेंगे, लेकिन हसन अली और शाहीन आफरीदी जो है वो ये ओवर करेंगे शुरू के. क्यों ये लोग कोशिश नहीं करते कि शायद स्पिनर ट्राई करें? और फिर अगर स्पिनर्स भी आप लेके आ रहे हो ना, शादाब है, उसामा मीर है, आपका इफ्तिखार है, who actually bowl relatively well. आप सऊद शकील को क्यों नहीं ट्राई करते? आप कोई और पार्ट टाइमर को क्यों नहीं लेके आते? Yeah. आप 4-5 बंदे स्पिन कराते रहे. आपके पास स्पिनर्स निकल आते हैं टीम के अंदर, जो सिर्फ बैट्समैन होते हैं वो भी स्पिन करते हैं. आपके पास वो स्पिनर्स निकल आएंगे, आप उनको ट्राई आउट करो. Yeah, आप उनको surprise them. Yeah, surprise the other team. Yeah. सरप्राइज द टीम जिनके लिए उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया. फॉर एग्जांपल मुझे याद है एक दफा साउथ अफ्रीका का गेम था और उन लोगों से विकेट नहीं निकल रही थी. आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्ट ईयर और द ओपोनेंट टीम और व्हाट नॉट, बट व्हाट आई डू रिमेंबर इज दैट कि अचानक से एबी डिविलियर्स आ गया बॉलिंग कराने, एंड ही एक्चुअली गॉट द विकेट इन द सेम ओवर. Yeah. He broke the partnership. तो इस तरह से कभी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी करनी होती है, which I don't see कि it's happening in पाकिस्तानी कैंप. उसके अलावा दूसरी चीज जो मुझे काफी मुंह पे आके लग रही है वो ये है कि I think there are issues in the Pakistani team besides the game. I think there are issues with the connectivity among the players. There are issues with the attitude, temperament, or something along the line. So मसले हैं. So अब ये है Yeah. कि and unfortunately, sorry, my last thing I'm gonna say, unfortunately ये सारी चीजें वर्ल्ड कप से पहले सॉर्ट आउट होने की थी, जो कि वर्ल्ड कप में अब सामने एक्सपोज हो रही हैं. अब ये हमारी डर्टी लॉन्ड्री पूरी दुनिया के सामने आ रही है और अब ये यहाँ से वापस जाएंगे तो उसको फिक्स करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, एंड इट्स ऑलरेडी टू लेट. Yeah, two things I was gonna add. I mean, actually एक चीज मेरी सही थी कि मैं चाह रहा था बाबर आजम के रन आ जाएं. So he scored what 74, even though उसका strike rate थोड़ा slow था, लेकिन
अदर थिंग मैंने नोटिस की यार, आई थिंक पाकिस्तान की टीम, आई थिंक देयर फटीग, देयर एग्जॉस्टेड, क्योंकि अगर आप देखो बायलैटरल खेल के आ रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, उसमें भी हमने किसी यंगस्टर्स को ट्राई नहीं किया, और एशिया कप में भी हमने इतने ज्यादा ट्राई नहीं किए, तो हम लोग आई थिंक वी आर रियली लैग बिहाइंड यार, क्योंकि इतना फटीग, बाबर, रिजवान, Shaheen, Haris, Naseem, they're all playing, and Naseem got so fatigued he ended up really, we know what happened with him. और So यही बात हमने पिछले 2 पॉडकास्ट में भी डिस्कस की थी कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ हमने ट्राई नहीं की है। बिल्कुल वही भी नहीं। तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं और हमने अपनी बेंच के लिए कोई और लड़के जमा ही नहीं किए। आप अल्लाह अल्लाह करके अबरार को लेके गए, लेकिन उसको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया ट्रैवलिंग रिजर्व में कि आप उसको यूज ही नहीं कर सकते। हाँ, वो इंडिया घूम रहा है, बट दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। Yeah, so really, I think, yeah, Pakistan, I think they look fatigued, they look exhausted. Just body language just doesn't look right. And ये हमने नोट किया था एशिया कप से, so करेक्ट, it's, करेक्ट, it's trending now. आई एग्री, आई एग्री। I don't ऑलराइट गाइस, understand. I just don't understand why they're fatigued. वो तो 5 star होटल में रुक रहे हैं, बिरयानी शियानी खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं. They're just resting. I mean, what's उमर भाई मैड, ही I don't इज एंग्री understand. टुडे सही बात उमर भाई, you're absolutely right. लेकिन एंड I think 100%। लेकिन आई थिंक आई वाज गोना से, क्योंकि अगर आप देखो यार, ऑस्ट्रेलिया जब न्यूजीलैंड भी टीम भेजी थी, दे सेंट देयर बी टीम, राइट, दे वांटेड टू टेस्ट देयर बेंच स्ट्रेंथ। सो अगर आप इतने गेम्स खेलोगे, मतलब, और ओडीआई आपने इतने कम खेले थे, एग्जैक्टली। सो इट्स रियली टेक्स अ टोल on these guys. I mean, you can only play so much cricket, and with the mindset of T20 and ODIs now, I think these players are I don't know, I know they're getting paid big bucks, लेकिन उनको ये समझना होगा और दूसरे लड़कों को लाना होगा कि यार, विच इज आवर ओडीआई टीम, विच इज आवर T20 टीम, फोकस्ड, लाइक 100%, लैक ऑफ फोकस with PCB right now. 100%। एंड इफ यू रिमेंबर एशिया कप के अंदर इंडिया ने बांग्लादेश के अगेंस्ट अपने मेन प्लेयर्स बिठा के अपनी टीम भेजी थी। इवन दो दे लॉस्ट, दे डिडंट केयर, बिकॉज उनको पता था कि उनके मेन प्लेयर्स हैं बैठे हुए हैं और वो फाइनल के लिए दे विल बी फाइन। तो आई थिंक पाकिस्तान को इस तरह की हिकमत अमली करनी पड़ेगी, वरना सर्वाइवल वुड बी वेरी डिफिकल्ट। Yeah, because I think the mindset is that we're trying to preserve हमारी अपनी जो number 1 rankings हैं, right? Whether it's in bowling or batting, कि हम उसे preserve कर लें, चाहे कुछ भी हो जाए, जीत ट्रू, जाएं ट्रू, against B teams and C teams. But this is the result of it basically. आपने कितने 100%। 22 गेम खेले हैं, I think, और 26 games in the last 2 years, which is not enough. And then you absolutely just use the same lineup over and over again. Yeah. करेक्ट। And just one last point, guys, on I've also noticed that the bowling side, right? I think they took a toll when Naseem got hurt. मुझे ऐसा लगा कि उनकी बैकबोन जो है ना, it really affected them in a negative way. It just they're not been the same since Naseem got hurt. या हम कहते थे कि पाकिस्तान हैज अ टॉप बॉलिंग अटैक, लेकिन आई थिंक जब से नसीम की इंजरी हुई है, they have not looked the same. लेकिन यार वो तो फिर आई एक ही या बंदा है वो, लेकिन for me he's just one नहीं person, नहीं, right? बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री, वो एक बंदा नहीं है। आई मीन, सिर्फ एक बंदे को नहीं खिला सकते, आई एग्री विद यू गाइस, लेकिन मुझे ऐसा लगा since his injury happened, Pakistan bowling attack has not been the same somehow. I mean, गाइस, I know this is राइट, just my 2 cents, but yeah, या ब्रेकिंग न्यूज, नसीम शाह होता है ना वो भी पिटता, वो भी पिटता, well, इंडियन पिचेस क्योंकि पे आई यहाँ की Exactly. विकेट्स ऐसी हैं। True. नो वन वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट। हमारे Yeah. यहाँ प्रिपरेशन हुई ही नहीं है कि यार हमारे 2 साल में हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में है, वहाँ की पिचेस एनालाइज करो, उसके लिहाज से प्रिपेयर करना शुरू करो। नो वन केयर्ड, नो वन लिटरली केयर्ड। सबने बोला कि यार हारिस रऊफ है, वो खींच खींच के मारेगा, और शाहीन जो है वो एक ही बॉल है उसके पास जो बिल्कुल आगे देता है, पैड की तरफ देता है, और वो एंड में आके अंदर आती है और बस वो उसी तरह रोहित शर्मा आउट होगा। नो, या हारिस रॉफ को तो पिटना बनता है, बिकॉज उसकी स्पीड है, ही कैन गो अप टू लाइक 145 150, लेकिन उसकी बॉल मूव नहीं होती जितनी नसीम बिल्कुल नहीं शाह आती। की होती थी। आई नो नसीम शाह भी पिटता, यू गाइस आर राइट, लेकिन बट अगेन विद हारिस, या आई डोंट नो, आई मीन ही इज बीइंग बीटन अप क्वाइट बैडली, देयर इज नो That is मूवमेंट विद हिज unfortunately true. बॉल। But any case, I think let's move on to the next topic. It hurts to talk about this, in all honesty. लेकिन ये है कि
some other good action going on. So let's discuss that. But I do not want to take this opportunity away from Ahsen. Ahsen, do you Yes. want to comment anything? No, all good, guys. I think that's pretty much it. We can't do much about it. बात करते रहेंगे तो उसमें बहुत मसले हैं, 100 मसले हैं. So let's move on. That's I have Pakistan, comments. baby. I have too many comments, right? जब आप I इतनी know. बुरी तरह पिटते हो, and then Irfan Pathan comes and he's dancing with Rashid afterwards, like बेइज्जती एक तो है, right? It's really mind-boggling that you lost that way. You So I cannot just, blame the winner. You cannot yeah, blame the winner. I mean, hats off As, to as, the Afghan team. Hats off to the Right. Afghan team. They did a Yeah. great job. और जो man of the match बना है, player of the match बना है, Yeah. he taunted on Pakistani government who are sending the Afghanis back to Back. Afghanistan. That's So it. I mean, That's they are and they are including politics in cricket, and no one is whining and crying about it. If that would have been Pakistan, oh boy. right. That's what I'm saying. That the winner calls the shot, right? So Yeah. अब वो जीते तो वो कुछ भी करें. There's बिल्कुल. nothing we can do about it. We just have to Yeah. suck it up and take that slap on our face. We have So to. We have to. nothing we And can not to do. forget, and not to forget that Afghanistan के लिए India जो है is just like UAE for Pakistan. It's like उनका their second pretty home. much फिर वो IPL भी खेलते हैं exactly, वहाँ yeah. पे, इंडियन प्लेयर्स के साथ भी वो लोग रहते हैं और उनके लिए बहुत सारी मतलब इंडिया favors them a lot. Indian Cricket Association favors them a lot, so they take full advantage of it. And not to take it away from them, they did play wonderful cricket. Don't get me wrong, I give them full credit for that. But involving politics at such forum where anyone else would have become a huge controversy and no one is saying a word, I think that's a bit biased, in my opinion. Agree. All right. For me, So they won, let's so they get to say whatever they want. yeah, they get to say what they want, unfortunately. Anyways, let's move on to the next point. South Africa. Guys, what do you say about that? South Ahsen, let's start with you. Yeah, South Africa is so surprising in this World Cup. But ऐसा हुआ है पहले भी कि South Africa have been winning all the games till semis, and in semi-final it just crash. अगर आप 99 का देखें उसके बाद भी I think round 3 तक भी या उसके बाद भी they have been doing like this. Whole World Cup में बहुत अच्छा खेलते हैं, like they are लगता है कि यार इन्हीं का World Cup है, semis में they drop. तो अगर आप उनकी winning सारे matches देखें so far, I mean they are scoring like 300 plus in every other game, and 350, 399, you name it. So all in all, the team is playing amazing. ऊपर के अगर 2-3 out भी हो जाते हैं उसके बाद भी they have middle order like that कि वो they can just come and play as an anchor, and also they can hit sixes. The way they are scoring the runs is amazing. So Pakistan का next game है. अल्लाह मालिक है, let's see what happens. But Pakistan will try. Pakistan South Africa games हमेशा अच्छे होते हैं, मतलब it's not just like one sided game. I'm hoping के वाला game भी next जो है हमारा is gonna be like we'll see some fight against each other. But yeah, but South Africa is doing so great so far in this World Cup. Umair? I'm just so glad that we moved on past the Pakistan Afghanistan topic. वो बस मेरा my blood was boiling, like what the hell. Anyways, what I'd like to say is that the proof is in the pudding. आप देखते हैं अगर South Africa की batting lineup, right? अगर आप if you take the top 10 scorers in the World Cup, number 1 Quinton de Kock, and then you have Markram, you have Klaassen. All of these 3 are in the top 10 scorers. I think de Kock ने score करे हैं 407 in the World Cup so far, right? And he can most likely break Sachin Tendulkar's record if he keeps going at this pace. So ये जो runs आ रहे हैं, just they have amazing technique and amazing balance on the team, और aggression भी वो दिखाते हैं. I don't see any player who's scoring at a rate of 70 strike rate या 75 जैसे हमारे players करते हैं, right? These guys are doing 160, 140, 120, and they're playing risk-free shots. These are like clean shots. So I would say it's not like their bowling is very daunting. You need that Rabada is running through lineups, or and Giddy, or any of these Nortje, or any of these guys. They're not. It's literally the batting that's carrying them. अगर वो पहले batting करते हैं, they're putting close to 400 on you. So I mean, yeah, that's all I can say. That their Correct. batting is what's carrying them. Correct.
Talal? Yeah, no, just like you guys said, right? Quinton de Kock, I mean, yeah, I think leading run scorer 407. I think what he has scored so far. But what I've noticed is they, like you said, right? They're scoring, they're batting first, they're scoring at crazy rate, 300 plus easy, no issue. But I think in chasing, they have a struggle. Like they couldn't beat Netherlands, they couldn't chase 245. So with Pakistan, I think if Pakistan bets first and somewhere, put maybe 300, 310, 320, then let's see, it'll be a test for South Africa to see if they can chase it down. Because I think in chasing, they're struggling. Batting first, they're really going crazy, putting up crazy scores. But it'll be interesting. But South Africa, I think, yeah, looking very dangerous, and I think it could be their air this year to win the whole thing. That's true. So I was just looking through South Africa's games. First game, they score 428 with 3 centuries in it. Second game, 311 with 1 century. Third game, they loses to Netherlands, but they were chasing. Again, they did not bat first. They were chasing. Couldn't chase 245. They all choked, not even a single 50. Then they played England. They bat first. They put 399 with a century. Then they play against Bangladesh. They put 382 with a century again. So, I mean, consistently, they have batsmen who are scoring centuries. And when they are batting first. So back to all of yours point that they play a very fearless cricket. Yes, they do take chances. जैसे कि उन्होंने chase करने में chance लिया, totally fine. 5 games में से 1 game हारे वो लोग और 4 game जीते और उसके अंदर उन्होंने bat first किया and they scored like mountain of runs. 300 plus at least, 311, 382, 399, 428. तो कहने का मकसद ये है कि जैसे उमैर कह रहा था, बिल्कुल यू हैव टू प्ले फियरलेस. आपका स्ट्राइक रेट काफी हाई होना चाहिए. आपको अगर एक अपर हैंड चाहिए गेम के अंदर, यू हैव टू प्ले लाइक दिस. आपको ये डर लगता है कि यार हम आउट हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, देन यू विल एंड अप प्लेइंग लाइक व्हाट 40-50 की एवरेज से प्रॉब्ली 70-80 के स्ट्राइक रेट से आप करेंगे. मे बी 30th-35th ओवर में जाके आपकी सेंचुरी होगी और जो किसी काम की नहीं होगी. You just described our top तो three. एग्जैक्टली उसका वो फिर आपका अपना रिकॉर्ड के लिए सेंचुरी है, वो टीम के लिए नहीं है अनफॉर्चुनेटली. या And हमें अच्छा लगेगा कि सॉरी. Yeah, and no, I was gonna say, and unfortunately, that's where we're lacking, right? Top three, just like Umair said, right? राइट. मेरी ये Okay. समझ में नहीं आता जब आपके पास Yeah. क्लीन हिटर है जैसे इफ्तिखार है, इस तरह के बैट्समैन आप ऊपर क्यों नहीं भेजते? Yeah. आप उसको एंड में लाके रखते हो कि जब तक कि सब कुछ ऊपर से खराब ना हो जाए तो ये बंदा आके बचाएगा आपको. और और इफ्तिखार के फौरन बाद आप भेज देते हो शाहीन को या हसन अली को, जैसे वो बहुत बड़े हिटर हैं, शाहिद अफरीदी की रीइंकार्नेशन है वो लोग. सो बट यासिर बॉल्स भी नहीं बचती इफ्तिखार के पास. लास्ट गेम जो था अभी जो गेम हुआ था अफगानिस्तान वाला, जब आपने सारी बॉल्स ही खत्म कर दी हैं, उसको 4-5 ओवर्स दिए तो वो कितने रन बनाएगा आखिर में? मतलब लाइक डोंट हैव बॉल्स 100%. देखो आपके पास बाबर है, ठीक है, इमाम है, आपके पास सऊद शकील है, ऊपर 5 में से 3 बंदे आपके पास ऐसे हैं जो एक जैसा खेलते हैं. सेम. रिजवान का आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि वो आउट होगा या खेलेगा. जितना वो उछलता है अपनी क्रीज के ऊपर, अपनी विकेट के आगे, आई एम सॉरी टू से, आई मीन यस ही प्लेज अमेजिंग शॉट, बट लेटली ऑल ही इज डूइंग इज जंपिंग एंड गेटिंग आउट ऑन अ वियर्डेस्ट वे पॉसिबल. क्या आप बोलते हो यार हुआ क्या ऐसे? ऐसे कौन एलबीडब्ल्यू आउट होता है यार? ऐसे कौन कैच देता है? बट ही डिड. तो आप रिलाई नहीं कर सकते. अब्दुल्ला चलो ठीक है, एक ऐसा एंकरिंग बंदा आ गया है कि चलो ही इज प्लेइंग गुड क्रिकेट, अच्छे शॉट सिलेक्शन भी है उसका, अच्छा खेलता भी है, मोमेंटम भी बना के रखता है. अगेन सेंचुरी कन्वर्जन हमारे बस की बात ही नहीं है. इंडिया की टीम में आप देख लो, आपके पास रोहित शर्मा है, आपके पास शुभमन गिल है, आपके पास ईशान किशन. ईशान किशन ऐसा बंदा है कि जिसने $200 200 रन बनाए हुए हैं, राइट. उसने 200 रन बनाए हुए हैं और उसकी जगह नहीं बनती कभी. शुभमन गिल ने 200 रन बनाए हुए हैं, और रोहित शर्मा का. इन सब की स्ट्राइक रेट्स अच्छी हैं. इंडिया में इन देखो, सबकी इंग्लैंड स्ट्राइक में रेट्स देखो, अच्छी हैं. और क्योंकि एग्जैक्टली.
वो इनके अंदर एक assertiveness है, एक tenacity है कि यार we have to play. I mean we are playing to win, you know, as opposed to just keep rotating the strike. और उसमें भी आप इतना टुक टुक करते हो जिसमें आपका strike rate जो होता है सफर करता है, और फिर जो मिडल ऑर्डर होता है उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है, एंड दे कैन नॉट, फिर वो आप मार फिर कितना मारेंगे आप जब आपके पास आप इतने आउट हो बिहाइंड जाते हो हैं, जाते हैं, दैट आप आउट इज हो ट्रू। जाएंगे। आप ये देखो ना कि वो as soon as they start playing, if you don't realize that batting is the way to win games this time around, especially with the power play restrictions, especially with the wickets that you have right now, जिस तरह की pitches हैं इंडिया की, it's all about batting strong. अगर आपने इस टूर्नामेंट के अंदर एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग बैटिंग नहीं की, आप गेम नहीं जीत सकते। और इसमें आपको जब ट्रेंड यही है इसमें कि जो भी बैटिंग कर रहे हैं और सब अगर अच्छे स्कोर्स बना रहे हैं 300 प्लस, देयर ऑल द टीम्स दैट आर विनिंग, यू नो। आप देखो एग्जैक्टली किसी ने 220 या 225 या 190 188 किसी ने नहीं बनाया जो कि वो जीते हो। दे आर ऑल स्कोरिंग 300 प्लस। नेदरलैंड्स इज एन एक्सेप्शन, जो नेदरलैंड्स और एक्सेप्शन है, साउथ चलो, अफ्रीका या का हुआ। यस, हाँ, लेकिन यस, दैट्स एन that was more एक्सेप्शन, of a choke, more of a choke job by South Africa, more of a but choke। regardless of that, yeah, या सो मतलब इस तरह आप कभी भी इस तरह की बैटिंग करते हुए नहीं आगे बढ़ सकते। यस, मैंने पिछले पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि इवन दो ऑस्ट्रेलिया ने शुरू में आके छक्के चौके मार के उन्होंने काफी अपना स्कोर बना लिया था, पाकिस्तान ने आहिस्ते 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 करते करते जब वो उस पॉइंट पे पहुंचे जहां पे ऑस्ट्रेलिया वाज एट 175 विद नो विकेट, पाकिस्तान वाज एट 169 विद 2 विकेट्स, पाकिस्तान मेड इट टू दैट पॉइंट, ठीक है ना। लेकिन मसला ये है कि अगर आपने स्कोर 350 375 तक ले जाना है, दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू फ्लाई, दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू फ्लाई। एट द मोस्ट आप जाके रुक जाओगे 300 315 320 तक, आप आगे नहीं बढ़ सकते उसके। So again, बात वही आ जाती है कि they have to play fearless cricket, but all credit to South Africa this time around. उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया है काफी टीमों को, और अब जो बहुत खतरनाक और भयंकर गेम उनका आने वाला है वो है पाकिस्तान के साथ कल। आई मीन परसों, टेक्निकली परसों, लेकिन हमारे यहाँ कल रात से yeah. ही फेस्टिविटीज शुरू हो जाएंगी कि हमारे धुरंधर और हमारे जो भी हैं वो निकल के जाएंगे और वो लड़ेंगे साउथ अफ्रीका के साथ। एंड Oh God, that अगर उन्होंने पहले बैटिंग की, oh, it will be a massacre. It will be a massacre. Big time. Yeah. So let's move into that. Let's move into that topic then. Pakistan, South Africa. All right. अच्छा, Go ahead, Ahsen. या उससे पहले मैं ये सोच रहा था कि आज, बल्कि आज मतलब अभी तो यहाँ पे 12 नहीं बजे हैं, मतलब कल जो मैच है वो इंग्लैंड श्रीलंका का है। एंड इफ यू सी द स्टैंडिंग्स राइट नाउ, इंग्लैंड ने 4 गेम्स खेले हैं एंड दे लॉस्ट 1, एंड सॉरी दे लॉस्ट 3 एंड दे वन 1। तो अगर आज वो मैच जीत जाते हैं श्रीलंका से बिग टाइम, कल जो मैच जीत जाते हैं बिग टाइम जीतते हैं अगर, सो दे विल, पाकिस्तान एंड इंग्लैंड विल बी ऑन द सेम पेस। लाइक पाकिस्तान हैव प्लेड 5, win 2, lost 3. England will be playing 5, win 2, lost 3. So हो सकता है कि अगर उनका रन रेट अच्छा हुआ तो पाकिस्तान से ऊपर आ जाए, पाकिस्तान will down to 6। तो ये भी पॉसिबल है आज के Not मैच to के forget Afghanistan. Afghanistan is right there too. already उनका Yeah. yeah, yep, yeah. you're right, तो उनका रन रेट थोड़ा सा कम है पाकिस्तान से, लेकिन but they are right up there. right तो up अगर there, 3 गेम वो लोग जीत गए या कुछ भी उन्होंने किया, then ऊपर आ जाएंगे, भाई, yeah. think about So, it। so right. So I have no hopes for Pakistan. I am not trying to have any hope with Pakistan this time around. Yeah, कि this is not good, and this is, and it shouldn't be like this either. ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें अगर खेलना है तो हमें ऐसे खेलना है कि भाई हमने 5 में से 4 जीत लिए, एक आधा हार गए, समझ में आता है, not the other way around. सही। तो अब ये है कि मैं 2019 के वर्ल्ड कप से कंपेयर करें, 2019 में भी हम हारे थे, हम आगे नहीं बढ़ गए थे सेमीज तक, बट लास्ट 4 गेम जो थे हम जीते थे, बट आखिर में आई थिंक बारिश हो गई थी और कुछ रेन रेट की वजह से रह गए थे। तो अभी इंडिया अगर हार गया था इंग्लैंड से, है ना, हाँ इंग्लैंड, यस, इंडिया हार तो गया था इंग्लैंड से। करेक्ट। तो अब अगर हम पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की प्रिडिक्शन की बात करें, राइट, कि कौन जीतेगा, ये बात करें यासिर, तो इसमें तो Yes. अब मैं आज, I'm सॉरी, दिल पे हाथ पत्थर रख के बोल रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका के चांसेस ज्यादा हैं, सो दे कैन विन। अब अब मैं और कोई गलत प्रेडिक्शंस नहीं देना चाहता हूँ, उमैर एंड तलाल,
and Yasir. तो ये है कि क्योंकि last two podcasts maybe we were saying I said Pakistan and Australia won, then I said Afghanistan and Australia, Pakistan and Australia, Afghanistan And won. inshallah, this time around you're wrong. Inshallah. Inshallah, inshallah. I want to be wrong. I will happy to be wrong. Yeah. तो ताकि मैं जब next podcast में आऊँ तो I'll have some Pakistani songs playing in my background and we celebrated Talal in our style. So so that's what we want. So yeah, let's see how it goes. But it's gonna be a let's match अच्छा होगा अगर start अच्छा मिलता है पाकिस्तान को अच्छा start मिलता है पहली बैटिंग करके और अगर मजे का हो कि 100 कोई बनाए सेंचुरी करे and then we'll see. But South Africa is coming so crazy; they have more chance to win. Umair. For me, I think okay, we're on our last legs. So at this point, आप Haris Rauf को बाहर निकालो, bring in Wasim Jr. As one of the changes, and also I don't think this Osama Mir experiment really worked. So फिर आप is Abrar in the 15 or is he in the traveling reserves? No, he's in the traveling reserve. Unless someone Okay. gets sick or cannot play the rest of the tournament, go back home. There's the only way Abrar can come in. So I Gotcha. hope someone just push Fakhar Zaman down the stairs or somewhere. Yeah, you know, नवाज को कोई धक्का वक्का दे दे बाहर स्टेडियम पे और उसकी जगह फिर उसको वापस पाकिस्तान भेज के और अबरार को ला सकते हैं. लेकिन भाई एक बात मैं आपको बताऊं, even bringing in Abrar won't, it will make a slight difference. लेकिन जो mindset है ना टीम का वो बहुत defensive है. But I'll let you finish first. Go ahead. Yeah. No, I agree कि एक दो personnel say, you know, it won't change the results, but at least जो ये जो youth आ रहे हैं, right, they will have something to prove. It's like their first cap and they're going to try really hard. वो बहुत कोशिश करेंगे. Not like our guys who, you know, are taking it for granted. So I would definitely make those changes. I would either bring Nawaz back and bring Wasim Jr. because Harris is very expensive. Batting lineup, I don't see an issue. I would keep it the same. I would just encourage, you know, Imam to also try, you know, being more aggressive. Because Shafiq actually hit 2 sixes, right? हमारे वो जो सर पे रख रही थी वो कि we have not hit a six the whole the whole year in ODIs. We finally did it. So Shafiq definitely proved it well. So coming to the South African side, I think we usually have the bowlers to, you know, rattle them if they're chasing. So I don't know, man. I think I think I'd still give the edge to South Africa because you know, and at this point I'll be being illogical if I'm picking Pakistan over South Africa, even though my heart says, you know, 40-60, you know, Pakistan way, but obviously I think it's some more logically it's South Africa 60-40. As last time we discussed that there is a difference between an expectation and prediction. Yeah. You're All right, Talal. Yeah, man, agree with you guys. You guys, you know, said it correctly. It's just 60-40 Pakistan, maybe, or sorry, 60-40 South Africa even, or maybe 80-20. I don't know. The way have South Africa has performed so far, yeah, they are clear-cut favorites against Pakistan. The only chance we have, अगर हम पहले बैटिंग कर लें, कुछ ना कुछ कर दें, maybe 300, 325, 340, शायद कुछ प्रेशर आ जाए साउथ अफ्रीका के ऊपर, क्योंकि वो हमेशा यूजुअली स्ट्रगल करते हैं चेस में. तो ये एक चांस है, वेरी स्लिम मार्जिन. अगर कोई चमत्कार हो जाए और हम उसी पे आ गए, जैसे हम लगता है कि हर वर्ल्ड कप में यही होता है कि यार वो उसको हरा दे, ये इसको हरा दे, तो पाकिस्तान ऊपर आ जाए या बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो बस चमत्कार है. दिल पाकिस्तान दुआ कर सकते हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में, जो नसीब में लिखा है इस वर्ल्ड कप होगा तो होगा. और बस यही है कि यार हम बस बैटिंग कर लें समहाउ, और अगर बॉलिंग भी करते हैं समहाउ वी रिस्ट्रिक्ट देम, you know, low 300s or within or 280, 290, we might have a chance. Otherwise, I don't see it. I think it's South Africa. Right. Well, हम लोग दोबारा से दुआओं और वजीफों की स्टेज पे आ गए. वही, तो exactly. अब ये है कि अब क्योंकि कंटेंडर बहुत पावरफुल है ना आगे, क्योंकि आपका जिनके साथ पॉइंट्स टेबल के ऊपर जो क्या बोलते हैं उसको आमना सामना है, वो टीमें दे आर वेरी वेल केपेबल ऑफ टेकिंग अवे द गेम्स, जिसमें इंग्लैंड है, अफगानिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया तो ऑलरेडी टॉप 4 में आ गया है. सो ये श्रीलंका बांग्लादेश से आपको इतना थ्रेट नहीं है, लेकिन बाकी दो खास तौर पे इंग्लैंड और अफगानिस्तान, या दे कैन टेक आवर प्लेस एट एनी गिवन टाइम. सो
Okay, so Pakistan versus South Africa. I hope कि पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग करे और साउथ अफ्रीका को चेस करना हो. अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग पे आ जाता है then we are pretty much toast at that point. क्योंकि फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको रोकना. हमारे बॉलर्स रोक नहीं सकते. हमारे बॉलर्स अफगानी बैट्समैन को नहीं रोक सके यार. साउथ अफ्रीकन तो वैसे ही बिल्कुल तपे हुए आए मुझे लग रहा है. कौन सा बदला ले रहे हैं अल्लाह जानता है. So, वो तो मार मार के बेड़ा गर्क कर देंगे. 450 तो कहीं नहीं गए अगर उन्होंने पहले बैटिंग करना शुरू की तो. हमारे पास बॉलर्स ही नहीं है. अगर हमारी बैटिंग आ जाती है तो आई वुड से कि दे शुड गेट रिड ऑफ वन ऑफ द पेसर्स और उसकी जगह वो एक और स्पिनर लेके आए. एंड दे शुड यूज पार्ट टाइम स्पिनर्स. बेशक वो साउथ शकील हो या इवन इमाम से करा, इवन बाबी खुद आगे कर ले, लेकिन they should utilize the spin options. उनको रोकना, दे हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स. अदरवाइज आप अपनी वही सेट प्लान जो आपका प्लान है कि हम लोगों ने सिर्फ पेसर्स को लगाना है पहले के 10 ओवर, 11वें ओवर से हारिस आएगा तो फिर we're just gonna go with that. ऐसे ऐसे नहीं हो सकता. आपको with South Africa you do have to think outside the box. So I would say it's clearly written on the wall. It's 80% South Africa, 20% Pakistan. But let's see. कोई अगर upset हो जाता है, so it would be a miracle, as Talal said, कि कोई चमत्कार ही हो सकता है, कोई miracle ही हो सकता है. Otherwise जिस तरह की performances अभी तक आई हैं टूर्नामेंट के अंदर, it doesn't look good in favor of Pakistan. Google is saying that 38 Pakistan, 62 South Africa. So as per the stats and stuff. Google is so generous. Very patriotic. नहीं पाकिस्तान के साथ सच्ची मोहब्बत है गूगल को, इसलिए. Say. All right, guys. I think it's about time we should wrap it up. Any last minute comments, Ahsen? I'll start off with you. बस यार, let's see how the game goes and inshallah we'll take it from there. अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान हारता है तो उसके बाद जितने भी गेम्स रह जाते हैं फिर देखेंगे हम किसको सपोर्ट करेंगे, बट विल सी हाउ इट गोस के क्योंकि सेमीज के अंदर विल सी के कौन जाता है इंशाल्लाह, फिर विल पिक आवर टीम. सो हम 4 हैं तो विल पिक वन टीम ईच सेमीज के अंदर एंड विल सी हाउ इट गोस. Alright, चलो अगर आपको लूज करने का शौक है तो ठीक है. नहीं तो अपनी टीम पिक करेंगे. हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एक टीम पे आके हम चारों बोलेंगे ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है. Alright, Talal. Yeah, I don't know. I mean, at this stage, the way Pakistan is playing, I don't have any hopes. But वही वाली बात है, चमत्कार हो जाए, कुछ बैटिंग हम पहले कर जाएं, कुछ रन लगा दें बोर्ड पे तो चांस है हमारा. वरना अदरवाइज अगर ये हार गए तो आई थिंक better luck next time. We'll try again. Maybe next year T20 World Cup. So let's see. And अगर ये हारते हैं तो I would like to see कि कोई bench players अगर जो नहीं खेले हैं वो try करें. If they put them in the lineup just to see how they perform. Just to shuffle the lineup, just see what happens, just for the अगर sake टूर्नामेंट of वैसे ही चला गया हाथ से तो जस्ट लेट देम प्ले, राइट? दैट्स व्हाट यू आर let them सेइंग. play. क्योंकि कुछ बचा नहीं है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको आगे बढ़ना है. We have to move on यार, we have to move on from this debacle. So yeah. Totally agree. Umair, take it home. Sure. So from me, I think इनको decide करना चाहिए कि mentally क्या wrong है अभी. I don't think it's a physical problem. It's because they are, in the nets. They're playing their balls, maybe 1,000 balls per batsman. But I think the biggest thing is mentally they're just not there, and they're not giving it their best. I don't know if there's groupings in the team, and you hear all these things in the media, right? कि ये हो रहा है, वो हो रहा है. I'm not gonna buy into any of that until it's fully finished. But they have to come together as a unit. As far as like the semis are concerned, I think we already know, okay, South Africa, New Zealand, and India are already in it. So it's literally between Australia and the winner of South Africa and Pakistan. If we are to win, then we have to basically go carry that momentum, knowing that New Zealand se hum usually jeet jate hain, in World Cups mein and things like that. So it doesn't look good, but I'm not gonna lose hope until we're completely out of it.
So good luck, Until man. Pakistan team reaches to Pakistan. But what happens if Pakistan beats South Africa? Do you think they're winning their remaining 3 games? Who's left? Is it Bangladesh, New Zealand, and England. All right, so let me put it this way. What if? So What if? कल केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है ना? उसके बाद न्यूजीलैंड जो है वो बायोलॉजी है, और Yeah. उसके बाद इंग्लैंड जो है वो आपका फिजिक्स का पेपर है, जो कि मैं तो हमेशा फेल करता था। तो आई डोंट नो, बाकी बीच में और इस्लामियात का पेपर भी, बांग्लादेश आर्ट का नहीं इस्लामियात का पेपर है बांग्लादेश, नेवर नो। So yeah, all in all, I mean, I would say yeah, it has been an interesting event, interesting World Cup so far, और मजा आ रहा है, दिल खराब हो रहा है क्योंकि हम पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, और लेकिन in general, if we look at it in a from a macro perspective, जितने भी games हो रहे हैं बहुत entertaining हो रहे हैं, high scoring हो रहे हैं, so we get to see really good batting, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल ने 40 बॉल्स के ऊपर 100 मारा है, और अगर आप देखो उसने जो 48th ओवर खेला है, he was at 75, then he hit 2 4s, 2 6, and I think he scored 2 4, 2 6, 3 sixes, then he scored his century. तो इतना जबरदस्त उसने शॉट्स मारे हैं कि उसे एक ओवर में अपनी पूरी सेंचुरी पूरी कर, मतलब वो स्कोर को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया उसने। तो बहुत अच्छी बैटिंग देखने को भी मिल रही है, और फिर साउथ अफ्रीका, आई मीन यू वॉच देम बैट, आपका मैच हटाने का दिल नहीं करता, नो मैटर हु दे आर प्लेइंग विद। तो बड़ा मजा आ रहा है, और इंशाल्लाह अभी सेमीफाइनल तक जब पहुंचेंगे, वी वुड हैव क्लियर कट रिजल्ट्स के यार कौन सी 4 टीम है। And I really like your idea, Hassan. Each of us will pick one team and we'll go with that. ताकि हमारे podcast के अंदर हम लोग we will root for those teams. So inshallah, let's see. All right. That being said, thank you so much, Hassan. Thank you so much, Talaal. Thank you so very much, Umair. It was a pleasure talking to all of you. बहुत मजा आया, और इंशाल्लाह अब देखते हैं कि ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के गेम से पहले. So let's see how our predictions, how accurate our predictions are. So let's see. Or all the very best. Inshallah, I'll talk to you guys later. Assalamu alaikum. Bye.